जो आजकल बहुत सारे D2C ब्रांड्स हैं, दे हैव अ रियली हार्ड टाइम बिकमिंग प्रॉफिटेबल, क्योंकि यहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा है जब आप D2C ब्रांड होते हो. तो व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग दैट दे हैव टू फेस सो मच प्रॉब्लम इन बिकमिंग प्रॉफिटेबल इनिशियली? So I've seen a lot of brands around us, right, Mm. over time. So as founders, Anisha and me both had a very strong philosophy that the amount of time we spend in raising capital, especially for consumer brands, right, and the amount of time we have to spend on finance and convincing them, and it's a repeated process. If that much amount of time we give in understanding the consumers, I think we'll solve their problem much better. And if we solve their problem better than anyone else in the market, your right to win significantly goes up and the brand really scales very fast, right? So what we've also realized as a brand and as founders that the moment you raise a lot of capital, instead of really solving business problems and taking the right decisions, you take wrong decisions and go for short-term gains a lot of times. So these short-term gains really result in long-term problems for the brand. And a lot of marketing and a lot of investment inside these brands really push a lot of problems forward rather than it being solved permanently, right? So it becomes it goes into a negative loop of consistent fundraising and fund burning, burning, Yeah. instead of really becoming more and more efficient over time. And I think founders really need to treat capital with a lot of respect and not blow a lot of money in marketing on human resource when it's not required. So it's always the right amount of marketing investment, the right amount of human resource investment, Okay. and so that you can genuinely build something substantial. And the focus should not be on marketing, the focus should be on problem solving. Right. And that's the only way to grow profitably. Okay. You have mentioned quite a few times that your first and most important focus is building the right product जिसका कंज्यूमर को नीड है. सो आई द प्रोडक्ट दैट यू जस्ट मेंशन कि स्विम के पहले प्री स्विम स्किन केयर, सॉरी सनस्क्रीन, एंड पोस्ट स्विम वाला, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ऐसा कोई और फिट आपने जो ढूंढा जो गैप था? हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स ढूंढे. वी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट SPF लिप बाम. सो हम रियलाइज किए कि इंडिया में UVA एंड UVB इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके अंदर टैनिंग काफ़ी ज़्यादा होता है. इसलिए सब कंप्लेन कर रहे होते हैं कि समर्स है, टैन हो गई, टैन हो गया, बिकॉज ऑफ विच पीपल वांटेड प्रोटेक्शन. एंड खाली स्किन में नहीं हो रहा था और लिप में भी हो रहा था. सो वी रियलाइज कि यार सनस्क्रीन तो सब कर रहे हैं, बट कोई लिप सनस्क्रीन क्यों नहीं बना रहा. तो हम लिप बाम में लिप सनस्क्रीन डाल दिए सो दैट द प्रोटेक्शन दैट पीपल नीड फ्रॉम the sun, they could get that as well. ओके. मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम जो सब लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा अलग क्या करें. एंड it there should be a requirement as well that it should be solving a problem. You should be solving a real problem. So the moment you see other brands, right? Yeah. आप नया चीज कोई सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप जो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं उसको थोड़ा सा बेटर करने का ट्राई कर रहे हो. बट अगर आप कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करके जेन्युइनली एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन रखने का राइट होता है, बड़ा ब्रांड बिल्ड करने का राइट होता है. एंड अल्टीमेटली द रियल ट्रुथ इज कि कैन यू सॉल्व द कंज्यूमर प्रॉब्लम बेटर? इफ यू कैन, देन यू हैव द राइट टू बी वेरी वेरी लार्ज Okay. एज अ ब्रांड.